नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेप्थ बिफोर आई। डू यू वांट द फैन ऑन हियर और यू कंफर्टेबल? नहीं, तो यहाँ पर ना ये अभी ठंड होनी शुरू हो जाएगी। आई कैन फील इट इन द एयर। इसीलिए तो ये पहन के आया हूँ, हाँ मोटा है ये। हाँ। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एज यू कैन सी मेरे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण सर जी। पहले तो प्रणाम, नमस्कार। ऑलवेज अ नमस्कार। प्लेजर मीटिंग यू एंड ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू आमने सामने। हाँ सर, हमेशा आमने सामने। तो दिस इज अमेजिंग। सो सर इज हियर विद अस एंड मैं बोला कि व्हाई नॉट टॉक टू सर एंड गेट सम स्टफ आउट। सो एज आई टोल्ड यू लास्ट वीक कि काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरह की मैंने रखी हुई हैं। वे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, वे विल टॉक अबाउट प्रेजेंट, वी विल टॉक अबाउट सम ट्रेंड्स जिसके ऊपर मैंने और जनरल रायन ने काफी टाइम से बात नहीं करी है। वी बीन टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। सो अगले 1 2 3 पॉडकास्ट जो ये सर के साथ आएंगे, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट टुडे? आज बात करेंगे कि भाई भारत को रीजन के अंदर क्या चाहिए। एट द एंड ऑफ इट, आप अगर एक पार बनने की कोशिश कर रहे हो, सो यू वुड ऑल्सो वांट रीजनल हेजमनी, लाइक अमेरिका मांग रहा है ऐसा। सो इज दैट अ डिमांड और इज दैट अब आपका मॉडल ही डिफरेंट रहेगा सर? भारत ने प्लेबुक ही बदल दिया है। ही इज नॉट लुकिंग एट कि भाई रीजनल हेगेमॉन ये वो। ही इज लुकिंग एट स्टेबिलिटी एंड लिटरली इफ यू आर द बिग ब्रदर देन यू विल लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। बट देन वो अदर्स मतलब ताली दो हाथ से बचती है। तो दो आपके दाएं बाएं हैं जो जो पुराना जो डिक्लाइनिंग हेगेमॉन है उसके कहने पर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लाफा तो उनको पड़ेगा, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है लाफा तो उनको पड़ेगा। इट इज बट नेचुरल, बट दैट इज नॉट दैट यू विल डिक्टेट देयर पॉलिसीज। इट इज extension of what our PM Modi had mentioned many years ago about Sagar, security and growth for all in the region. Now you just tell me, are the people of Pakistan or Bangladesh secure? No. Are they having any growth? And yet Zero. the hierarchy that is there wants to earn money through the playbook. Like yesterday when we were discussing offline, you were there, your father was there. What has emerged very clearly and what you see happening in Bangladesh is there is a very, very rich elite and the rest are very poor. So now you brainwash the poor to work for you in a negative way. They go and do bomb blast, security threats they create in the region. They can become the fidain because there is nothing else for them in life. And for the family, because these people, as per the religion, they have large number of children available. So the mothers openly say that if one of them is doing it, they don't mind because at least at least there is food on the table. And I'm quoting today this statement which I have given is Kasab's mother, who was interviewed after he was sentenced to death. And this was what she bluntly said. पैसे है नहीं and you're procreating like rabbits. So that is the change you want. And you see the change which has happened in Sri Lanka, you see the change that has happened in Maldives. That yes, when you join the playbook, the new playbook of Sagar, then there is benefit for them and the society. Nepal is slowly turning around. समय लगता है. Bhutan has always been with you. Bangladesh has now come to you. Afghanistan. And just to wait and watch in next 5 to 10 years how the complete thing of the Taliban changes. Their outlook will change. Let's discuss country by country sir. Yeah. थोड़ा सा, सिंस आपने अफगानिस्तान मेंशन कर दिया है, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा थ्रेट इज स्टेबिलिटी, राइट? एंड उस इंस्टेबिलिटी के चक्कर में काफी सारी जो आउटफिट्स हैं, अभी पाकिस्तान का मैंने रिसेंटली इसके बारे में एक शो किया था कि नगरहार प्रोविंस के अंदर इन लोग आईसिस लेके बैठे हैं। आज सुबह बाय द वे वहां पर रेड हुई है, अननोन ड्रोन्स हिट देम, फेयर इनफ।
तो होता क्या है सर, अफगानिस्तान इज दैट, एंड सेकेंडली वी डोंट नो अगर तालिबान लास्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब इनका वॉट एवर सेड एंड डन, इट्स द तालिबान, दे विल हैव इन फाइटिंग एंड दिस एंड दैट। कहीं गोली चल गई, so you have a civil war, and war civil war will be brutal. So we are on unsure ground, but it's a good ground, there's no question. How do you see Afghanistan going forward considering this, उनकी इंटरनल दिस थिंग, उसके ऊपर से रशिया भी है सर, चाइना भी है। आज जो अमेरिका में वो शूटर को मारा है, एक शूटर ने बंदे को मारा है, वो भी अफगान निकला है, सो अमेरिका इज आल्सो गोना पुट प्रेशर। वहां पर ईरान भी है, everybody is there, China is there, we are there, Pakistan is trying to come inside there. तो how do you see अफगानिस्तान का फ्यूचर, एंड क्या तालिबान लास्ट कर सकता है इतना टाइम तक, जब हम उनको मतलब वी कैन ट्राई एंड स्लोली Like चेंज। someone had put it very nicely on the internet, a retired veteran, that Pakistan is an artificial country between two artificial lines. Okay, the Radcliffe and the Durand lines. Durand. Same is the case with Afghanistan. It is an artificial country in artificial lines drawn by the Britishers to protect their empire and have a buffer from the expanding Russian empire. पश्तून को जो राइज अप किया था इन लोगों ने। No, I'm just saying the whole Afghanistan as a whole. Otherwise, Afghanistan is essentially, you look at the provinces, you had Kandahar and Kabul. Kandahar and Kabul had always been influenced since time immemorial from Bharat. Then you had Balkh to the north. That was always influenced by the Khanate of Bukhara or from the north. वहीं से सारे इन्वेडर्स वही सब आते हाँ, and वहीं से सारे आपके बल्क प्रोविंस में वहीं पे आप देखोगे उज़्बेक्स है, ताजिक्स है, हजारों हैं। these are there, Kyrgyz. Like if you look at the Wakhan corridor, that's Kyrgyz. How it happened? Because the Gorno-Badakhshan area used to be with the Kyrgyz. It came subsequently to Tajiks, and that is how you find Kyrgyz sitting in Wakhan corridor without Currently, any connect to Kyrgyzstan. बॉर्डर ही नहीं है कोई। Border ही नहीं है, but they're there. There are no Tajiks there, there are no Pathans there, there are nobody there, they're Kyrgyz were there. Okay. And when you come to the west, Herat was always under the influence of Persia. ईरान, Persia. Persia. Okay. Okay. Except for a brief period of time when the Kashmir Karakota Empire had come in into all these regions, this has been the issue. So you have three sets of regions who have never been looking after each other. And now you have some. So subsequently, when the Britishers created that, unless you had a strong man in the center, they would dissipate away. नहीं होगा। They would dissipate away. Yeah, like the Durrani, you had Ghazni, you had Ghori, you had Durrani. Unless you have somebody there, it cannot happen. Today, the Taliban is there. But we also have an issue with them because they have a very, I would say, gory set of rules where they're going back into the 8th, 10th century Sharia laws. Correct. Okay. But as nations change, rightly, you lightly pointed out, that's why I gave 5-10 years time, because the change takes a little time. You never know who is the strong man who comes there, who will change. एक बंदा खड़ा हो गया जो बोलता है नहीं ये नहीं करना। Yeah. Okay. And he has a following and he stands up. Right? Last was the king of Afghanistan. हाँ, Zahid Shah. Zahid Shah. After that, Dawood came and he was a puppet of the Soviets, Barani, and then he didn't have that. And that is where the collapse has started from that time. Now, as far as China is concerned, while they're trying to reach there, nothing has happened. And I don't think the Afghans trust the Chinese as much, because while they had given them the rights for all the gas and oil along the Amud area to the north, वो तो फाड़ दिया उन्होंने, क्योंकि 4 साल कुछ किया नहीं.
That was the first contract given by the Taliban moment they came to power in 2021. दो दिए थे, एक वो और एक आइनक माइन कॉपर का, कॉपर का, आइनक माइन का आयना है, का, और एक और ये हाँ, था। इसको तो फाड़ के फेंक दिया है। अभी आइनक का कुछ नहीं कहा है, चुपचाप है। हाउ यू सी, फॉर यू getting there, how do you connect with them? Because you have a problem through the land corridor, हम्म, and you have an issue with the Chabahar, where the Americans come in and say हर sanctioned 6 महीने है, में 6 कर दो। महीने का ये है, हम्म, right? And that is why you have restarted the air corridor. Air corridor is expensive. Yeah. It's not cheap. सर जाते कहाँ से हम लोग? जाते अभी के लिए तो चाबहार से। ईरान से एयर कॉरिडोर? एयर कॉरिडोर तो ऊपर से आ जाएगा, ओवर सेंट्रल एशिया। यहाँ से Yeah. काराकोरम के ऊपर से। Yeah, you from there you come, either you come south if you're coming towards Mumbai. If you're coming towards Delhi, you can even come over Tajikistan. From Tajikistan, चाइना, ताजिकिस्तान अपना। चाइना, and उसके ऊपर से निकल के ले आओ, यहाँ पे ले आओ। When I was there, when we were renovating the Aini airfield, it used to come from Mumbai over Iran, and then fly in and come. Okay. Okay. So Iran, and then get it, not overfly Afghanistan. It used to go into Turkmenistan and then come. अच्छा ऐसे करके। हाँ, ऐसे. Because at that time Iran, you had Afghanistan, you had issues. वॉर चल रही थी उस War टाइम चल पे, रही correct, थी. हाँ। Okay. So they, as far as Russians are concerned, Russia is more concerned, as I see and understand, to the northern part of Afghanistan. आईसिस नहीं आना चाहिए। Yeah, into Central Asia. That is the soft underbelly. रशिया ने ये स्टेटमेंट भी दिया था थोड़े टाइम पहले, जहां उन्होंने बोला वी विल लाइक टू हेल्प द तालिबान फाइट द आईसिस। ISIS. Yeah. So their worry is their borders with Uzbeks, Tajiks, and a little bit that is there, which can hit Turkmenistan. Those are the soft underbellies, because Russia इन इलाकों को near abroad बोलता है. हाँ. ठीक है. They trust, as far as Afghans are concerned, as on date today, they trust you the most. They don't trust the Americans. In the, why you may say, for an argument's sake, that it was Trump who signed the deal. Signing the deal is one thing. The manner in which you executed it and ran away is in traditional countries is not considered manly. correct. It was a repetition of what they did in Vietnam. तुम खुले में जाते एकदम चौड़ में कोई नहीं, it is on the ambassador who is there ना. अगर वो बोलता एंड धीरे 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 सबको निकाल के इवैक्यूएट करना शुरू करके फिर निकल जाता, like the ambassador in Vietnam, क्या नाम था, I think Gordon or something, till the last minute he refused to evacuate, and you had similar gory scenes of people trying to hang on to aircrafts and hang on to helicopters to come away, and you left behind so many people who used to work for you. Correct. And you took back with you who were your assassins, and one of them has knocked off two of your National Guards. And what's your response? Hegseth says, I want 500 more in Washington. National Guards deployed in Washington. अब ऐसे लोगों को लेके आओगे तो ऐसी हरकत होगी. And you say now no more Afghans to come in. So गलत लोगों को ले गए और जिनको लेके जाना था उनको ले नहीं गए. अच्छे लोग, फैमिलीज, हाँ, वो भी बेचारी अभी भी वहीं पे सड़ रहे हैं. वो तो वहीं सड़ रहे हैं. So now you have reached out to them. They have faith in you. You are working with them. And you will do to Pakistan from there, I'm blunt about it, what Pakistan has been doing with you for so many decades. रोज एक धमाका का हमारा पॉलिसी है डेफटॉक्स यूजर. तो वो तो होता रहेगा. And Pakistan actually today has no answers. Correct. कुछ भी नहीं है. I remember when I was in service also, they used to speak that our response is slower than if something happens in Pakistan. And their army responds very fast. So I used to at that time bluntly say, all these are being
orchestrated by the ISI and army to get a victimhood certificate that they are also affected by terrorism. तो जब मेरे को पता है फौज को कि फलाने टाइम इतने बजे ये होना है, मैं तो तैयार गाड़ी में बैठा हूं, जैसे तुमने बोला मैं भाग गया। अब पता लग रहा है दूध का दूध और पानी का पानी, जब कुटाई होती है आते आते कितनी देर हो जाती है। It's a fact of life. Even if you have a QRT, they would have opened their shoes, हथियार साथ में रखा होगा, जब लेट रहा है, रेस्ट कर रहा है, बीपीजे नहीं पहना होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड बुलेट प्रूफ सर पे जो लगाते हो हेलमेट वगैरह, वो पहन के तो कोई सोता नहीं है। हथियार साइड में है, ये उतारा हुआ है, जूते उतारे हुए हैं, आप लेटे हो, जैसे ही सायरन बजता है फर्स्ट थिंग यू विल डू इज भाग के पहले मुंह पे पानी डालो, दैट यू बिकम अवेयर, जो स्लीपीनेस है गया, फिर ये अपने आप को ड्रेस पहनो, भागो, गाड़ी में ड्राइवर भी आएगा, बैठो, देन गो। तो आपको 10, 15, 20 मिनट कहीं नहीं गए हैं। इफ यू टेल मी दैट 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको पहले से पता था कि वहां पे क्या होने वाला है। फॉल्स फ्लैग तो करते हैं, बहुत बहुत करते हैं, दे ब्लेम अस फॉर इट, बट दे में जिसको ब्लेम करना है करो, ओके। So I am giving, because the way we will work to change the thinking of the people in power, धीरे धीरे होता है ये चेंज, फट से नहीं आएगा। फट से करने की कोशिश करोगे तो वो होगा जो आप बोल रहे हो, सिविल वॉर। आप प्लेबुक बदल रहे हो। आप देखो आज से 15 साल बाद आपका सार्क दोबारा एक्टिव हो जाएगा। people hate that name nowadays. It may come in a different name. Yeah, वो है। It may come in a different name, because I have always been of the view, ये बिम्स्टेक बोलते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जो आसियान कंट्रीज के मेन पोस्ट हैं, पैसिफिक पोर्ट्स हैं, वो पैसिफिक में है। None of them have a big port, viable port, जहां से ट्रेड होगा on the Bay of Bengal. ये कि बना रहे हो आर्चे बनेगा तो आएगा कुछ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। They nothing. वो आप बना रहे हो, वो भी इंडोनेशिया हमारे के पोर्ट लिए। से सामने होगा सर, हमारे से तो। इंडोनेशिया को आप बना रहे हो Yeah. with your deal. Okay. They're nothing. Starts from Singapore onwards that side. हाँ, सिंगापुर एंड पूरा ईस्टर्न कोस्ट में, बिकॉज पैसे यूएस ने दिए थे, सारा ट्रेड इनका यूएस के साथ होता था, और थोड़ा ट्रेड इनका यूरोप के साथ होता था, तो यहां से निकल के आके चले जाते थे। दे नथिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो व्हाट बिम्स्टेक आर यू गोइंग टू डू? आपका पोर्ट है और श्रीलंका का पोर्ट है और बांग्लादेश का पोर्ट है। Correct. Okay. So this is Afghanistan. Pakistan and Bangladesh will take a little, Pakistan will take more effort. Bangladesh may not require that much effort, but मेहनत करनी पड़ेगी। चलते उस पे आते हैं सर। लेट्स कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान, आई मीन माय थिंग इज, बचेगा ही नहीं पहले तो, ठीक है, तो आपको पीसेस में डील करना पड़ेगा। अभी सडनली आपने सिंध की बात करी है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैंने अपने चैनल के ऊपर किया था, छाछरो रेड के ऊपर मैंने शो किया था सर, वेयर वी कवर्ड कहाँ घुसे थे हम लोग, ये वो एंड ऑल दैट। उसके बाद सिंध की ज्योग्राफी हमने देखी, ये देखा वहाँ पर पॉपुलेशन हॉस्टाइल है आपकी, बट यू नो इफ यू रिमेंबर, हमने मैप डिस्कस किया था पाकिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ सिंध अंडर सुजरेनिटी ऑफ भारत, ये चीज हमने बोली थी उस टाइम पे। तो एक ये भी ऑप्शन है अगर आप सिंध के लिए कुछ कर रहे हो। सिंध ही क्यों, बलूचिस्तान आपकी तरफ है, सिंध आपने ले लिया तो यू गेट अ डायरेक्ट लैंड लिंक टू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड देन देयर सेंट्रल एशिया। समझ रहे हो बात? तो छोटा सा जो कॉरिडोर है आपका सिंध आ गया, सिंध लिंक्स टू बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के थ्रू आप पहुंच गए, और जो इतना रेकोडिक माइन बोल रहे हो आपको मिल गया। रेकोडिक माइन इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बॉर्डरिंग ईरान, अफगानिस्तान, इनसाइड बलूचिस्तान। बलूचिस्तान खुलेगा, सिंध आपके साथ है, सड़क बनी हुई है, यू आर ऑल द वे थ्रू, एंड मोमेंट सिंध गोज,
पाकिस्तान हैज नो पोर्ट लेफ्ट, नेवी तो है नहीं वैसे भी, देयर इज नो पोर्ट लेफ्ट, नथिंग, देन ही इज डिपेंडेंट ऑन सिंध, then you get the handle on him to squeeze him when he doesn't behave. Now, is that a viable option कि हमको इस तरफ जाना चाहिए कि we should look at the Gilgit-Baltistan route into Central Asia? तो जब आप ये बोलते हो तो वो दौड़ेगा नहीं यहाँ पे, बूट्स कहाँ है उसके पास? है ही नहीं। तो अब वो बूट्स जो ऊपर लगा रखा है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो आप रूज दे आपने रहे हो। एक्सरसाइज भी वहीं किया है, आप रूज दे रहे हो। रूज भी हो सकता है, और इफ ही डजंट बाइट इट यू कैन डू इट आल्सो। हाँ, ये तो खुले में बोल सकते हैं। आई मीन लेट्स से हम तो झूठ बोल रहे हैं, सिंध में हमारा एक्चुअल कॉन्टैक्ट पीओजे के है, पीओजे के भागेगा, हम सिंध में घुस जाते हैं। It is up to, see, these are the things to put him in a spin, because now he has, like we had two live borders, Pakistan and China. China तो डफ हो गया आपका भी. So the main live border that you have today existing is Pakistan. That is the reason why US wants to activate through Pakistan your Bangladesh border. लिटिल रियलाइजिंग कि बांग्लादेश आर्मी ने कभी इस तरह का किया नहीं है. पाकिस्तान इज पास्ट मास्टर एट दिस. उल्टे काम। उल्टे काम तो स्टार्टिंग विद 47 when he came into Kashmir with non-state actors. Now these are become state-sponsored, openly state-sponsored actors. It's not his army. The state-sponsored actors are there. Yeah. Right? Bangladesh has never done that. They don't know it. जल्दी होता नहीं है. That's how you remember when they tried to send them in with the Bangladesh army and the Jamaitis to create the so-called humanitarian corridor. पिट पुटा के भाग के आ गए, गोलियां चल गई, भाग कितने गए. ठुके हैं वो, या उसके भी गोलियां अलग चल story गई, है। वो भाग के आ गए जी। वापस. Which tells you that they don't know how to do it. They've never done it. So to create a live boundary, they must have thought Bangladesh is ideal, because Bangladesh is surrounded on three sides by India. कि इंडिया की वाट लगेगी. लिटिल रियलाइजिंग दैट इंडिया हैज द रिसोर्सेस, आपने अपने स्टेशंस एक्टिवेट कर दिए हैं, और जिसका आंसर बांग्लादेश के पास नहीं है. ओके, एज फार एज पाकिस्तान गोज, दैट्स व्हाई आई से इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज द आर्मी हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड पॉलिटिकली. रिमेंबर दैट. आप हर लड़ाई देखो, जब वो पिटता है आपसे, इन द एंड अल्टीमेटली 2-3 साल के बाद आर्मी एमर्जेस स्ट्रॉन्गर. लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. सो आप बोल रहे हो दिस पाकिस्तान का विल हैव टू बी फेज ऑपरेशन. सो लेट मी, पिछले वाले में आपने जो करा पाकिस्तान को, यू ब्रॉट हिम टू अ पॉइंट कि भाई उसको एक चीज पता चल गई है कि यार मार बड़ी जोर से पड़ेगी, बट इट कांट एडमिट दैट. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन में आप इससे क्या एडमिट कराओगे कि भैया हाँ मुझे मार पड़ी है? नहीं, ऑपरेशन छोड़ो, आपने किया क्या? सिंदूर के बाद अपने आप को पूरा नैरेटिव वॉर चला के उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, खेत मार्शल. उसके बाद अभी 27th अमेंडमेंट लेके आया. हुआ क्या है अभी? 27th अमेंडमेंट लेके आया है, एंड इमीडिएटली व्हाट हैज स्टार्टेड? द रूमर दैट इमरान खान इज डेड. Now the people are on the streets against the army. ये बीच में जब ये इमरान खान को अरेस्ट किया था, people were on the streets. There was a very negative image about the army. He has worked overtime to change that. And just one rumor, whether it's confirmed or not, I don't know. One bit of information, वो गई भैंस तेल लेने. PTI and people are back on the streets shouting against army and Munir in particular. बट वो भी इतना नहीं है सर, तो वो भी स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है वहां पर. वो अभी शुरू हुआ है. अच्छा चलो ठीक. अभी तो शुरुआत है. So this is how you build up your negativity. See, it started when the negativity against the army the last time. May 9th. No, when he was sacked and removed as the
हाँ वही PM. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का हटाया जो May 9 Yeah, को May 9th को when you tried to arrest him. या So that was when it commenced, when you illegally removed him through a parliament that you are no longer. What? Then people came on the streets. Now again, when you tried to arrest him for all the violence and other things, trying to tell about him, then again it peaked. So today, this has happened. That the last 1 or 2 days, that Imran Khan is dead, Adiala jail, they've buried him, they've done that. His sisters went, they've dragged away by the hair, and that's what is claimed. I have not seen the video. And people are, PTI and his supporters are on the street. Whatever people may say about Imran Khan, but his PTI has the maximum groundswell support today. It is something like the PTI is the Awami League of Pakistan. Okay. you will मतलब they are bringing it to a point कि वो खत्म हो जाए but वो खत्म नहीं हो रही. Correct. So now what you are planning to do is, how do you break this hold of what the Pakistan army has? The next step I see is to break the army. Delegitimize करना पड़ेगा उसको. तो वो आर्मी को तोड़ना है ना. So now you will find people works will go on, because as per the constitution, what he has brought in, Chief of Defence Force is also the Chief of Army Staff. He is very scared to be away from the army and not control the army. You think the corps commanders are happy? You think the div commanders are happy? Everybody wanted to be the chief. Now, and he is there for life, so nobody will be the chief. 89, 90, late 80s और 90s के बैच वाले तो obviously हैं. सब नाराज होंगे ना. मेरे पास इंटर है सर कि जो कोर है पाकिस्तान का, मुल्तान कोर कमांडर, रावलपिंडी कोर कमांडर, पेशावर कोर कमांडर, which is considered the core, and जो No, कश्मीर में पेशावर तो proper 11 कोर है. हाँ और नहीं, which is considered the main hold of our, and जम्मू कश्मीर वाले ने अभी कुछ बोला नहीं है. तो JNK वाला is the Rawalpindi हाँ one, but 10 उसका core. एक वो है, उसने कुछ 10 core is the coup core. ठीक है. साउथ में जो दो हैं, वो तीन तो हैं. नाराज है. आपकी भावलपुर 31, कराची 5 and 2 core. क्वेटा Quetta is 12 core. 12, ये तीन नाराज हैं. यार अभी see, basically what has happened is, he has told the Pak army officers that you can at best right to be a corps commander. Till I am there, nobody is the chief. And that's not a good thing for the Pak army. Because he's made one mistake that Musharraf also made. You know वो mistake क्या है सर? ये जो chiefs की meeting के लिए बैठते हैं लोग, what used to happen was, जो मुशर्रफ नहीं होता था तो कोई फायदा नहीं था. प्लस इसके नीचे वाले जो बंदे थे जो उसने बाद में लगाए वो तो जूनियर थे. सो ही गॉट वन चैप अप एज द वाइस चीफ एंड 4 सितारे पे लाके उसको वहां बिठा देता था. आसिम मुनीर इज डूइंग द सेम थिंग. नहीं, 4 सितारे तो और कोई हो ही नहीं सकता ना. चीफ को ही होता है. वाइस चीफ इज 3 तारा. कह रहा है वाइस चीफ विल बी अ 4 स्टार. उसने जो भी बोला है. अब आप देख लो, अब तो खुंदक हो गई लोगों की यार. वही है, जो वाइस चीफ है वो फिर उतारेगा इसको ही. कोई भी करेगा. एंड दिस हैज टू बी प्लेड अप विद इन दी, not just within the army, it has to be played up within the people on the streets. बट स्ट्रीट भी सिर्फ पंजाब ही है ना सर, और तो कोई है नहीं. पहले तो खैर थोड़ा बहुत आपको सिंध में था. अब सिंध में भी पीपल आर डेड अगेंस्ट द आर्मी, क्योंकि वहां पर तो आप वो कनाल शनाल बना रहे हो और ये सब कर रहे हो. So that is what is the sentiments which you will be playing up. And that is what I meant when I said that you have to defeat the Pakistan army politically. Why do you think for the first time that वो जो supposedly suicide bomber with the belt is going around with DHA? That's controlled by the army. बंदे का पता ही नहीं लग रहा किधर है. Either that's controlled by the army or they've lost control over this. No, I'm saying DHA is controlled by the army, and that's a big slap on their face. Yeah. आपको बंदा ही नहीं पता लग रहा कि कहाँ है. भाग रहे थे इधर से उधर से. You don't even know. DHA में लाहौर में, which is like उनके, I would encourage गूगल पे जाके DHA लाहौर के घर देखो आप जाके. कोठियां है यार, घर बोल रहा है. ठीक है. एंड वहां पर सुसाइड बॉम्बर घूम रहा है. ट्रस्ट यू मी, दैट्स लाइक द कोर ऑफ पाकिस्तान. जो
डीप स्टेट है ना पाकिस्तान की, वही रहती है वो। elite So of deep state ही है Pakistan. वो। बिल्कुल Actual deep state is that There. money power is yeah there. Lahore. yeah so जब ये होगा, so that is why I said Pakistan will take a little more time. When the work is on, mistakes he is making. 27th amendment is the biggest blunder. You think अभी सोचता है वो कि यार 27th amendment के बाद मैं बच गया, मुशर्रफ जैसे केस नहीं होगा। भाई साहब, दूसरा तेरा तख्ता पलट करके 27th amendment से वो स्पेसिफिक क्लॉज हटा देगा, तेरा क्या होगा? 28th amendment लेके आएगा और वो क्लॉज जो तेरा इम्यूनिटी का है वो निकाल के तेरा कोर्ट केस कर देगा, जैसे दैट चैप वाज ड्रैग्ड टू कोर्ट, मुशर्रफ। So he has closed all doors for himself. Either he is in exile or he is buried under the ground. There are no other options for him. And he knows it very well. इसीलिए अपने वाइफ और तीनों बच्चों के लिए उसने यूएस सिटीजनशिप करा के यूएस भेज चुका है। उसको वेरी क्लियर है कि मैं या तो चला जाऊंगा यूएस या जमीन के नीचे जाऊंगा। देयर इज नो अदर थर्ड ऑप्शन फॉर हिम। बचा नहीं है। एंटेगनाइज सो मेनी पीपल। आई एम श्योर पीएमएनएल में भी टूटेगा। द वे शाहबाज शरीफ इज जस्ट लेइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, पीपीपी भी टूट होगी। द वे अपना बिल्लो रानी हैज लेड आउट कंप्लीट आउट इन फ्रंट ऑफ, इन्हीं दोनों के मदद से तो ये 27th अमेंडमेंट गया है। ऑपोजिशन तो वॉकड आउट, इन्हीं दोनों ने मदद किया, तो ये टूटेंगे। यू थिंक दोस पार्टीज विल सर्वाइव? सो देयर इज a churning which is going on within Pakistan today. And Mullah Munir has not played his cards well. अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं इतने चीज हाथ पैर मार रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं, भारत को एंटेगनाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई तो मुझे हमला करे कि मैं गाजा में बंदे ना भेज सकूं। नाउ ही हैज नो आंसर व्हेन द एम्बेसडर ऑफ इजराइल हैज apologized to the ambassador of Pakistan and said we are sorry for what all is happening and all that. Of course, यूएस ने बोला होगा। अब जब अमेरिकन उसको बोलेंगे ट्रूप्स भेजो और सऊदीज बोलेगा मेरे को ट्रूप्स दो, लाएगा कहां से? 25,000 is a huge number, sir. 25 एक और 25 दूसरे तरफ, यार इट्स वर्चुअली लाइक अ कोर। 5 डिवीजन, ऑलमोस्ट अ कोर स्ट्रेंथ। वो हेडक्वार्टर भी चाहिए होगा तेरे को, कौन किसको निकाल के भेजेगा? वो 2 लेफ्टिनेंट जनरल जाएंगे, 3 एटलीस्ट। आई डोंट नो व्हिच स्ट्रक्चर से जाएगा, अब जाएगा। And then you have to fight. The moment the first bullet of a Pakistani today, unlike in 69 what Zia did, 70 with that Zia did in Jordan. अकल कहाँ थी? या इन जॉर्डन में किया था, नहीं कनेक्टिविटी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था क्या हुआ यहाँ पे। टुडे तो सोशल मीडिया इज रैम्पेंट एवरीवेयर। पहली गोली चली, पाकिस्तान विल बी ऑन फायर। So what does he do? When So you are doing exactly what the Soros gang has tried. Your disruption, your delegitimizing, derecognizing, insulting the institutions, then you destabilize from inside, there's chaos. And then from there, one person rises and comes and sorts out the chaos. So institutional insult तो पाकिस्तान में हो चुका है, वो तो है, दिख रहा है। अब इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो चुका है। तो अभी इसके ये सब देख रहे हो sorry, suddenly there moves into Bangladesh and there is a certain rush जिहादियों को बांग्लादेश में establish करने का। there is a certain rush, you're seeing the ISI, you're seeing the many people, and वहां पर by the way it's not without damage, वहां पर पाकिस्तानियों को भी डैमेज हो रहा है, मर रहे हैं, ठुक रहे हैं। एक वो ये सडनली ये जो स्विच हुआ है,
कि ये पूरी जिहादी तंजीमों को एलईटी भी चाहिए, उनको जेईएम भी चाहिए, वहां पर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. व्हाट आर दे ट्राइंग? व्हाई इज दिस रश टू शिफ्ट इनटू I बांग्लादेश? told you, no, the three sides of Bangladesh is surrounded by India. यहाँ तो एक ही बॉर्डर है ना. तो ही सेज कि ओके इंडिया अभी टू फ्रंट बचा ही नहीं है, उसको भी पता है. आपका एलएसी तो तकरीबन शांति हो गया है. वो भी तंग करता रहता है, बट एनीवेज. बस वो तो पीछे है, छोटे मोटे करता है कि कोई यूके के पासपोर्ट से, यूके से आई है वो अरुणाचली, लैंड्स इन शंघाई, तो उसको डिटेन किया, ये किया, वो इस तरह की बेसिस वो हुआ. और आपने एक बंदे को उठा लिया I mean, नेपाल से. that's just too convenient. So they are trying, but again, like I tell you, na, what the Jametis have also not understood, yaar, कि normal Bengali is not into these things. Yeah, no. उसको आता नहीं है ये सब करना. वो गुर्दा और नहीं है. नहीं यार, अब वो हो जाता है कि you are going into a society where bulk of the society hates the Jametis. I don't know now, sir. I mean, some आपके people. बंदे तो how are you ठोकोइंग the Pakistanis, Yeah, of or course, somebody is ठोकोइंग the Pakistanis because the people are telling कि वो वहां पे है. I was talking to Deep Haldar. हाँ. Yes. Sorry. I was talking to Deep Haldar. He said, यार, in the past some time ना इतनी radicalization हो गई है वहां पर, इतनी radicalization हो गई है कि it's, कहता है यार, never seen something like that. Hatred, this, that is on the street. That is on the street by that one group of people who are radicalized. Awami League, I won't, he may have his opinion, but if the maximum workers in a party or the biggest party out there is Awami, Still. Awami is not radicalized, then how do you say that the whole lot are radicalized? It's not. It's not. It's the Jametis. They are being given the weapons. They come on the street. Okay. So it is happening. Now just look at it when they tried to burn down apna Bangabandhu's house. Yeah. Who did a reverse intifada on them? The people of Bangladesh threw stones at those people. It was a reverse intifada on them. And they had no answer. They had to run away. Correct. पथराव हो गया यार. Now that is what is going to happen to these people. पथराव आएगा उनके ऊपर. अब ये एलईटी वाले हमारे यहाँ पे करते थे, पथराव वगैरह करते थे. अब जब उनके ऊपर पथराव आएगा, जवाब है, भागेंगे. और फिर लोग बताएंगे कि वो उस घर में है, वो उस घर में है. जैसे वो ड्रोन अंदर जाके ठोक के आया. वो तो बता ही रहे ना सर. अगर आपके, देखिए, ये तो मेरे को भी पता है, आपने जिस प्रिसीजन से मारा है, मतलब किसी ने बताया है इस घर में, उस फ्लोर में. भावलपुर का यहाँ क्लियर पे एग्जांपल है सर. आधी रात को मारा, आपको पता था उस कमरे में कौन कौन था. आई मीन, यू मिस्ड वन रूम, वी प्रॉब्ली थॉट उसको भी लगेगी, वो लगा नहीं, बच गया सारा. कोई बात नहीं. जस्ट इन केस टाइप, Yeah. you know, hashtag just in case. But you had precise information. I mean, you can say, आप भाई इन 3 कमरों में है, आपको ये नहीं पता था कि एक कमरे में वो एक साइड वाले कमरे में बैठा है, which is extremely tactical information. वो लाना बड़ा मुश्किल होता है. Unless you have somebody totally inside. आपके पास वो था जो आपने ठोका इनको. तो ये इंफॉर्मेशन वाइज तो सर ये इनसे ही आ रही है, पाकिस्तानियों से लीक हो रही है जो भी चीजें हो रही है, और बांग्लादेश से लीक हो रही है. There is no question about it. And so the unknown gunmen have a field day. Okay. Right. So it is something, and since the media is controlled by the George Soros gang, they will only play up कि भाई जमेती क्या कर रहा है. The maximum following is Awami League. That is their fear, ना. They thought कि इसको डेथ सेंटेंस दे देंगे, ये कर देंगे, निकाल देंगे तो पार्टी टूटेगी. Hats off to Awami League. टूटी नहीं है. It's not broken. So this will turn around faster. Pakistan will take a little time. Okay. Because in Pakistan, the radicalization runs very deep. Institutionalized है सर उधर पे. भाई अभी इधर जब पे- आपके पास मिडिल क्लास बिल्कुल नहीं है,
You have extreme poverty or poor people, and you have the extremely rich people. Bulk of the population is comes in that poverty line. लो इनकम ग्रुप, वेरी लो इनकम ग्रुप, वो घूम रहे हैं वहां पे. उसके पास और कुछ करने को है नहीं. हर एक घर में 12-15 बच्चे हैं. 2-3 चले गए, कोई शहीद भी हो फर्क नहीं गया, कोई पड़ता. फर्क नहीं पड़ता कि घर पे तो कम से कम चूल्हा जलता है. And that same logic actually applies against Pakistan in TTP and all that. Yes. And it will act against Pakistan in Punjab. Because जिस वो जाएगा जिस see this ideologically maybe 10-15% I'll push the envelope and say 20% है. बाकी 80% पैसे के लिए है. जिसने ज्यादा पैसा दे दिया वो उसके लिए काम करेगा. वो तो एविडेंट है सर. एंड सी मेरा एक और पॉइंट है अबाउट वेयर आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर दैट प्लेस. जैसे जैसे ये देखिए इनको यूरोप पैसे दे देगा, अमेरिका दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा. जैसे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के पैसे कम होंगे, अब फॉर सेल सिचुएशन हो जाती है उसके बाद बंदे. See, the problem today is like you had mentioned that ISIS and all that they pay more money. Yeah. Money कहाँ से आता है? US and Europe. उनके पैसे खत्म हो रहे हैं. उनके पैसे खत्म हो रहे हैं. जैसे जैसे money flow into this goes down, money flow at the other side is coming up. Because the other side has still steady flow है. अगर यहाँ पे मैं 12,000 दे रहा था, वहां पे आप 50,000 दे रहे थे, वो 50,000 घटते 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 5,000 पे आ जाएगा. You know, one thing I'm just noting down. If you look at, and this is probably an incomplete thought at the moment. So बांग्लादेश में एक जो चीज है जो ट्राइबल यूनिटी जो निकल रही है बाहर, right? Especially in the eastern part That is of Chittagong Hill Tracts. Chittagong Hill Tracts. What we are seeing is there are tribal societies, there are tribal units, there are tribal all this stuff which is coming inside in that area. And इनके पुराने जो 70s के 80s के जो units थे, they are activating. Reviving. Who's activating them, forget it, but something is happening in that area. Plus, आपका जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश के साथ इज द नॉर्थ ईस्ट, राइट? आपको अपना बॉर्डर सीधा करना है, आपको ये करना है, वो करना है, ऑल दैट यू नीड टू डू. आपको इधर का भी फेंसिंग करनी है, चिकन नेक का वो सीधा करना है, जो भी करना है आपको. एंड ऑफ कोर्स म्यांमार के साथ भी आपको ये चीजें करनी है. इस टाइम पे जो बांग्लादेश में हो रहा है सर, दैट अमेरिका इज फंडिंग आर्म्स इनटू रोहिंग्या ग्रुप्स हु आर फाइटिंग द अराकान आर्मी अगेंस्ट द जनता. मतलब जनता के लिए लड़ रहे हैं वो, अगेंस्ट द अराकान आर्मी, उसको सेफ करने के लिए. अमेरिका का कुछ डील हुई है जनता के साथ. मेरे हिसाब से दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर आर्टिफिशियल स्टेट लाइक पाकिस्तान. See, the problem is this is that the Arakan army has not been, the Rohingya has not been able to make any dent on the Arakan army. एक दो जगह पे हुआ था, बट that doesn't make any difference. Okay. Arakan army has the full support of the locals and the people around there. The locals and the people hate the Rohingyas because the Rohingyas were brought there from outside. They are not local. उनको लेके आए थे अराकान में काम करने के लिए. ठीक है, that is, those are the Rohingyas out there. And the three brothers, Arakan is part of the three brothers. दाल निकल रही है. Also, we have to remember at the time of independence, Chittagong never wanted to go to Pakistan. Chittagong wanted to merge with India. तो शिलेट का भी यही था. Yeah, but Sylhet has a Muslim population. Okay. Chittagong did not have then a Muslim predominant तो पूरी population. बात लगा रखी है वहाँ पर. ठीक है, वो तो बाद में लोग आ गए. Did not have, and so Chittagong as a whole, that is Chittagong, That- Cox's Bazar, Teknaf, that complete area wanted to go to India. And the decision makers at that point in time did not take it. Exactly like something like Nepal had sent in the 50s that they wanted to be part of India. Okay. That is the stupidest So, decision we This took. is the problem. Why I am saying it is Rohingyas can never succeed because they form a very small percentage of population in Arakan. 12 लाख.
very small percentage of वो population. भी कहाँ हैं सर? 12 लाख तो टोटल थे, वो तो increase भी निकल होगी, but they spread all around the dispersed place. all over. अब लेके आओ करो, कैसे लड़ोगे? वो तो they'll get picked up by the locals out there कि ये अराकान वाला ये अपना रोहिंग्या आया हुआ है, पिट जाएगा. Junta today why is the junta today quiet? Because Arakan and most of the north has gone from its hands. It only holds central and southern Myanmar. और कहीं उसका कंट्रोल नहीं है. RIT doesn't run there. Let's get into Myanmar, sir. So, audience, I hope you're flowing. हम लोग एक उसमें जा रहे हैं. म्यांमार में सर एक और चीज है. There are PMCs working. PMCs. Eric Private military contractors. Eric Prince is there. It's not Blackwater. उसकी एक PMC registered है हांगकांग के अंदर. हांगकांग के साथ वो चाइना के साथ काम कर रहा है. He's securing the Kachin से वो रूट सिक्योर करता है उसका. जो आप PMC के ये जो मूवमेंट्स देख रहे हो अंदर, एंड एरिक प्रिंस हैज बीन स्पॉटेड इन म्यांमार अभी रिसेंटली. तो कुछ हुआ है, देयर समथिंग हैपनिंग. अमेरिकन आर्मी की जो सडनली ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप आया था, ठुके हैं काफी सारे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट देयर वाज समथिंग हैपनिंग इन दैट रीजन इन म्यांमार. व्हाई दाल इनकी गलेगी नहीं. Why did the three brothers and all come in and throw out China? Northeast Myanmar, Kachin, which borders China, is very rich in rare earth. China was doing illegal mining out there. China is not an environmentalist. वो जो भी climate change का claim करता है सब बकवास है. Rare earth mining using acids and chemicals is very harmful not only to the environment, it's cancerous. The cancer cases were rising in that region, and that is how the people went violent, and then that sees the rise of the local armies and the Three Brothers Alliance which was formed, and that is how they became victorious. The Americans are eyeing that. You think the people will permit them? जो चीन को लात मार के, जिसके साथ बॉर्डर है इतना लंबा, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ हाउ मच, more than 1 lakh, 2 lakh of Chinese have been kicked out from there, and they are in Yuan in displaced camps. They used to run whole lot of not just casinos this, and they used to run casinos. There was gambling human dens, human smuggling cases. They used to have enforced prostitution by the women, and they ये used जो to. स्कैम सेंटर चलते हैं सारे Yeah. चलते हैं. हाँ. So that is how they became angry, and they have kicked out the Chinese. Good luck to Eric Bean. If the Americans think they can send the PWC out there, well, you might find some unknown gunmen knocking out some of the PWCs out there. So simple. Because you see, it was becoming a humanitarian disaster in that area. The first evidence of this, where the local people in that region went against the Chinese and they had kicked them out, was as far back as 2011. Please check on the Michkina Dam. Okay, it was a disaster because quite a lot of villages were going to be submerged. Number two, 95% of the electricity was to go to China. Only 5% there, and the Yeah. people said, we are working here. How come we are not going to get any Same electricity? demand in POJ के. Yeah. Now So- यहाँ पर so- सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पैराडाइम बनती है. देखिए, you have basically a trading relationship between Myanmar and China right now, and Myanmar के अंदर काफी इंटरेस्ट है. बट अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, let's look at the great power game between America and China. When this report came of the Operation Sindoor, and pardon me, I'll just take a minute, sir, to put the paradigm in place. Yeah. अब सिंदूर की जो रिपोर्ट आई यूएस की कांग्रेस में, मैंने उस टाइम पे बोला कि इट सीम्स लाइक अमेरिका वांट्स इंडिया एंड चाइना टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इशू. दे वांट दैट. वो दिख रहा था बिकॉज दे केप्ट फोकसिंग ऑन चाइना. जहां पर अमेरिका के वो सेटअप से नूर खान में बोलता है चाइनीज बैठे हैं. अच्छा, ठीक है. सो दे वांटेड टू फोकस देयर. फैंटास्टिक, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. तो मैंने एक ये पैराडाइम देखा. देन आई स्टार्टेड जूमिंग आउट. आई सेड यार व्हाट इज अमेरिका डूइंग टुडे? तो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट सामने आई. रशिया के साथ यूक्रेन, रोमानिया, उधर पे वो
चाहे ये ठंडा हो जाए, एक और खड़ा है उसके सामने, हमारे सामने आसपास इसने आग जला रखी है, कभी डिफेंस डील करता है श्रीलंका के साथ, कभी इधर उधर इधर उधर, ही इज डूइंग दैट। चाइना के साथ क्या कर रहा है? Then I looked, I said, yeah, there are two areas where he's starting to trouble China. One is in Myanmar, and second is Japan, apart from the South China Sea. सेंट्रल एशिया में घुस गया है ये, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के साथ ही इज टॉकिंग, एंड रशिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग। तो वहां पर आई थिंक ही इज ट्राइंग टू कट हिज ऑयल, ईरान में तंग कर रहा है, ट्राइंग टू कट हिज ऑयल, एंड म्यांमार की जो पाइपलाइन है, इफ ही डिस्टर्ब्स दैट, the only thing he needs to do with Russia is finish Russian oil capacity right now, which is what he's doing through Ukraine. Drones attacks and all that nonsense is happening inside Russia. Russia has lost quite a bit of capacity. So China का जो fuel alternative है, it goes for a complete toss actually. Right? China is not smart enough to actually have multiple contracts with people, and it's not done that. No, see, So is this part of that containment in Myanmar? I'll firstly caution you on that. There's very limited oil which goes through that pipeline from Sittwe. CMEC. Exact. No, Kyaukphu से जो जाता है, Kyaukphu से जाता है to Yunnan. There's very limited oil and gas which goes there. China doesn't depend on that completely. 275,000 barrels a day, if I'm not mistaken. Which is nothing as far as China is concerned. There is the shipping which comes, and there is now finally the pipeline which the Russians have given them for oil and gas coming from the north. That is not disruptive. Okay. Consumption of oil in China is quite high. Yeah. So this is very small. He wants to have a turmoil in this region which will keep you also on your toes, which is not happening. People have forgotten that a few months ago, the heads of the Three Brothers Alliance, they were here in Delhi. 4th of, actually it's been a year, sir. Yeah. 4th of November last year. And they had a detailed meeting and discussion. And after that you see कैसे इनके अपने जो valley based, जो valley based militants हैं of northeast, उनके camps ठुके, और लीडो रोड और ये सब चीजों पे भी एक्टिवेशन आपने देखा है अभी। Yeah, so that is there. They are very comfortable dealing with you. They are very anti the Chinese. They don't trust the Americans. For Americans to say कि मैं वहां जाके कुछ कर लूंगा, जिस जगह में लोकल पीपल को आपके भरोसा नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? किधर कर लोगे? You think the military जनता आप बोल रहे हो तो वो मान लेगा? मिलिट्री जनता तो टोटल डिपेंड्स ऑन चाइना। ये जो कैपिटल बना है इनका रंगून से निकाल के नया पड़ाव, न्यू प्लेस, उनके इसमें नाइपीडाओ बोलते हैं। दैट वाज मेड बाय चाइना यार। सो टू से कि अमेरिकन वहां चले जाएंगे, जुंटा को निकाल देंगे, जुंटा नोज यार, जैसे ही चाइना ने हाथ हटा दिया तो मैं तो खत्म हूं। He won't survive. You think Americans will come to survive? In my opinion, Americans are supporting the junta. With what? यही कतरा जा रहा है रोहिंग्या के साथ। यार क्या कर रहे हो? रोहिंग्या को तो सबसे पहले लूट के मारा था जुंटा ने। So this is a narrative that the Americans, junta is working with the Americans. It cannot. It will not survive. The complete survival of the junta today is with the Chinese. It can't survive. Chinese and Russians. Russians बहुत small. Aviation at least. हाँ, very small. Bulk is the Chinese. इनके जितने भी military पोर्ट्स बने हैं अपने बॉर्डर एरिया के पास में, सारा चीनियों ने बना के दिया है यार। सो द नैरेटिव दैट आई समहाउ फाइंड आई कांट बाइट एंड बाय दैट नैरेटिव कि यार जुंटा अमेरिकन्स के साथ काम कर रहा है, जनता चुपचाप बैठा है, क्योंकि नॉर्थ म्यांमार में कुछ करने की उसकी क्षमता ही नहीं है। ही कांट डू एनीथिंग। तो जितना साउथ में कंसोलिडेट कर सकता है वो कंसोलिडेट करके बैठा है, वही जगह है उसके पास, और कुछ है नहीं।
when we see Myanmar आगे, sir, how do you see Myanmar का future in the See, next 3-5 years? Myanmar में considering- another 5 to 10 years, you may find that the northern areas become autonomous. India may not like to break it, though the Americans would love that it breaks. You will work with them, with the Janta, to make it an autonomous region. As it is, उनका रिट उतना चलता नहीं था वहां पे, आर्मी के दबाव से वो चलाने की कोशिश करते थे. रिट डजंट रन. द मोमेंट यू गिव इट अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, then at least the people are at peace and there is some development that can take place. And it's very clear, whether it be the Chinese, whether it be the Americans, they don't want anything but to squeeze out all the resources from there for themselves. और इनकी लार टपक रही है for rare earth from there. कि बना बनाया सिस्टम है, वहां हम जाके बैठ जाएंगे और वहां से रेयर अर्थ निकाल के अपने लिए लेके आएंगे. किधर से लेके आओगे? So Myanmar is that area, and the way you have targeted the terrorist camps in North Myanmar is a messaging to the Americans also that my writ runs here, and the Three Brothers Alliance are with me, and my writ runs here. You want to do anything, you come through me. So वो अमेरिकन्स को रास नहीं आ रहा. कोशिश वो जरूर करेंगे वहां पे कुछ ना कुछ करने के लिए. द मोमेंट PWC person goes there, PMC person goes there, he is not going there. What is, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? only the routes, कुछ नहीं. shipments and routes and all Which that. route? When you have no company out there, which route and what shipment? He is going to create a turmoil. So there is a degree of deniability that is available to the Americans कि यार हमारे बंदे नहीं है, हमारे CIA के बंदे नहीं है, but it is sponsored by them to create a turmoil. And when you go there to create a turmoil, yaar, the American sticks out like a sore thumb out there. ठुकेगा. If he thinks he'll make use of the locals and get them there, the locals in North Myanmar are totally in support with the Three Brothers Alliance. कितना पैसा दे के खरीदोगे यार? तुम पैसे कहाँ है तेरे पास? तेरा वैसे ही यूएस का वाट लगा हुआ है आफ्टर द टैरिफ वॉर. टैरिफ वॉर नहीं करता तो शायद पैसे थे. अब तो टैरिफ वॉर के बाद पैसे ही खत्म हो गए तेरे. If every 71 days you are going to have a 1 trillion debt, excluding your maturing treasury bond debt annually जो तेरे को चाहिए, आज क्या where will you survive? big beautiful bill, हाँ. जितना बोल दे यार मेरी तरफ से ब्यूटीफुल बिल है, ये बिल है, वो बिल है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज you are 37 trillion in debt. You are not able to sell your bonds abroad. Every month bond निकलता है इनका treasury bond. Okay, not being bought by anybody, but constitutionally your banks, the private banks, are obligated to buy it, whatever is balance after the auction, and they cannot demand their money back. How long can you survive like that? Yeah, that is how Moody's Analytics has said that every 71 days he is adding 1 trillion debt to I mean, that too is unsustainable to me, sir. Yeah, it's not sustainable. So how much money will you be able to pay and how long? वही है, वो ड्रग्स के पैसे जो ये करना शुरू करते हैं. So that is the second. Good, you raised that point. The second thing that they want to control out there the flow of drugs is the flow of drugs. Pakistan The and Eastern Triangle. नहीं, पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम हुआ है कि तालिबान ने ड्रग्स वहां पे बल्क बंद कर दिए. सो द गोल्डन क्रेसेंट इज गॉन. पाकिस्तान के पास उतना भी नहीं है ड्रग्स ना. बल्क ऑफ द ड्रग्स यूज्ड टू कम फ्रॉम अफगानिस्तान. वो उन्होंने खत्म कर दिया है पॉपी फील्ड्स. सो द ओनली प्लेस दैट इज लेफ्ट, नहीं, अफगानिस्तान ने खत्म किया, पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान ने खत्म कर दिया. but Pakistan has switched to वो तो दूसरा करेगा, chemical meth and all that meth and all that. But कितना कर सकता है? Bulk of the drugs comes from this Eastern Triangle, Cambodia, Laos, and all these places. जावा टैबलेट्स जिस तरह के पकड़ी जाती हैं, So, that is what he wants to control. That is what CIA wants to control. That is what is going to be the primary task of the PMC. Yeah, that's what I feel. क्योंकि Right. इस जगह में जो चीजें इनको एक्टिवेट करनी है उसके लिए they have to create a self funding mechanism. That is the drugs which is there.
है ना? और कोलंबिया से तो वैसे ही उन्होंने लड़ाई ले ली है, ट्रंप ने। कोलंबिया हैज थ्रोन हिज हैट विद वेनेजुएला। तो वहां से कितना ड्रग्स आएगा कोलंबिया से, ही डजंट नो। नाउ इज मोर वरीड that Colombian drug money will be available to Venezuela apart from whatever drug money he does it. किस से लड़ाई लड़ोगे यार? You say that I've sent a carrier fleet. If you don't have the spunk in you to land your troops out there, what are you going to do? And by the way, off the subject, but we just did क्या बोलते हैं ना उसको, diplomatic consultations with Venezuela today. Yeah. I was like, यार ये क्या है? इंडिया कहाँ से आ गया बीच में मैच के? So no, that is the problem that is there as far as North Vietnam is concerned. But I am sanguine. You see most of the Northeast, and now you look at कुछ हो रहा है मणिपुर में, वो कुकीज उल्टे सीधे काम करते रहते हैं सर. कोशिश करते रहते हैं. But is it at that level and space that it was earlier? The only thing is, the people who are IDPs जो थे, displaced people, they've not. ऐसे होने के बाद it takes a little time. Yeah. Takes a little time. Now let's swing to the south, sir. You've got Now we come to Sri Lanka, which you had mentioned. Sri Lanka and Defense Maldives. deal. So Sri Lanka लेते हैं. It's no defense deal. The agreement has been signed with National Guard. So let's be very clear कि National Guard, which is like a territorial army, उसके साथ sign हुआ है for training on humanitarian assistance. Okay, that area of humanitarian assistance and National Guard के साथ जो किया हुआ है, its office is based with Central Command. Now there is a clash here. Sri Lanka per se comes within the area of responsibility of Pacific Command, Indo-Pacific Command. हाँ, इसका तो पाकिस्तान साउथवर्ड पूरा. पाकिस्तान साउथवर्ड नहीं, your west coast down east up to the east coast of America is Indo-Pac. Okay, Gujarat parallel towards West Asia. उसके साउथ जो एरिया है, west of India and south of the line running from Gujarat coast towards the West Asian coast, okay. that is Africa Com. North पिद्दू सा एरिया जो है आपका, नॉर्थ अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ एंड ऑल दैट, CENTCOM. दैट इज सेंट. तो पाकिस्तान CENTCOM में आता है. Obviously, वेस्ट होगी पाकिस्तान CENTCOM में. तो you also have your LO in, by the way, in CENTCOM. इंडियन मिलिट्री का 2 LO होता था पहले, एक होता था इंडो पैकॉम में. यू ऑल्सो हैव योर LO इन आसिफ मुनीर को ठुकवा देते हैं सर. ठीक है, CENTCOM. अब ठीक है, नेशनल गार्ड इज लाइक टेरिटोरियल आर्मी. कोई डिफेंस डील नहीं है. देयर नथिंग कि भाई डिफेंस डील साइन कर दिया. इट हैज अ डिफरेंट इम्प्लीकेशन. कोई अपना बेका ये वो सब कुछ कोई साइन नहीं हुआ. इट इज अ डील विद द नेशनल गार्ड टू हेल्प ट्रेन देम फॉर HADR. कब आता है नेशनल गार्ड? आज की तारीख में तो नेशनल गार्ड को तो वो इनसाइड US डिप्लॉय कर रखा है सब तरफ, to assist the ICE in the blue states and other places to sort it out. What is National Guard is going to come here? Nothing can come here. Sri Lanka knows very clearly that अगर भारत का हाथ उठ गया, गिरेगा बहुत बुरी तरह से. नहीं, IMF का लोन ही नहीं आएगा. IMF नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा. यूरोप वाले भी नहीं देंगे इसको. So he goes, so he is with you. Maldives को क्लियर हो गया है कि भाई साहब अगर भारत का हाथ उठ गया. Shocking that 60-foot photograph of Modi ji was like, what the hell is that? You can do nothing without him. 60 feet. I mean वो फंडे क्लियर हो गए ना कि चाइना ने इतना उल्लू बना दिया उसको, कख नहीं दिया उसको. लेट जाता, लेट गया, यहाँ पे आके पांव पे साष्टांग नमस्कार करके गया है. आपके जो पहले बोल रहा था इंडिया आउट, उसने तो आपको कई चीज दे दी है अपने आइलैंड्स में. बट यू हैव टेकन इट इन द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड which is closer to your this thing, which he was earlier planning to give it to China. The airfield that you are airport that you are making, कौन सा Maindu Island, Hindu Island ऐसी कुछ है, मिंदू, that was to be made by the Chinese. You are making it. हाँ, वो तो क्रैक हो गया था. जापान के साथ था पहले कंसोर्टियम, and then now it's you are making it. us. हाँ. I am more interested that
we should look at in future to get the Ghan airfield going. Ghan is in the southernmost archipelago. Southeast में हाँ. Southernmost archipelago, just 60 nautical miles from Diego Garcia. See, when you look at the map of the Indian Ocean, Sri Lanka, Maldives, it's a straight line which splits the Indian Ocean into two parts. इनके बीच में से जो जाता है. Yeah, it splits the it splits the Indian Ocean into two parts. If you control this, your Indian Navy can switch from east to west very easily. Without any. That was the reason why the Chinese were making so much inroads trying to come in to take control of Sri Lanka and Maldives. Then they sit there. Then you will have to come all the way below Diego Garcia and go. Diego Garcia में तो आपका वो भी डल रहा है अभी, satellite monitoring station. Of course, that's what is being told. That is what is being told. But see, unfortunate part is Diego Garcia के original inhabitants were all kicked out by the Britishers. Yeah. And removed, and that area was given to the Americans. It's a victualling base, logistic base है, और कुछ नहीं है वहाँ पे. Small group of rocky islands and all that, उसको लेके उन्होंने वो बनाया है. आपको वहाँ पे सैटेलाइट का लोकेशन मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए आसान होता है. One of the atolls, if they have given you, is because you are able to see most of the satellites. There's no clutter, na? Light clutter नहीं है. Yeah, there is no clutter. So it's a very good spot which can link to what you have another, which gives I think 270 days or 275 days, 300 days, clear days. 65 days आपको नहीं दिखता है, which is the rainy season portion. Clouds बहुत आ जाते हैं. So with these two, you are able to track and monitor and do all the satellites. But his biggest fear is this, that now the Britishers are handing over that area to Madagascar. पैसे नहीं है Britishers के पास. People don't know. France has already applied to IMF for a bailout. US and Germany are in talks with IMF for a bailout. So much for them being global north. जब पैसे नहीं होते हैं तो यही चीज होता है कि भाई साहब आई कांट कंट्रोल इट. मेडागास्कर से निकाला था आपने, सॉरी मॉरिशस से निकाला था आपने, मॉरिशस को वापस दे रहे हैं. सो दे गिविंग इट बैक टू मॉरिशस, नॉट मेडागास्कर. मॉरिशस दे आर गिविंग इट बैक. Americans are screaming because the Brits haven't spoken to Americans. Americans don't have the money to fund it. They used to pay the money to the Brits. उनसे डील किया होगा. मॉरिशस में ask for more. नहीं देते थे सर पैसे पूसे. They used to reduce the British World War II debt. Yeah, तो वो कवर अप करते थे. तो that's what I said ना, डील विल हुआ होगा. Now you'll have to pay to the Mauritius. Correct. तो इसमें लास्ट में सर, when you look at the overall situation, America has its footprint everywhere. श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, नेपाल में है. नेपाल तो खैर अभी it's stable-ish but dangerous. Bhutan is the only place वहाँ पर अभी safe है. Bangladesh and Myanmar. How do you see Nepal, and overall how do you see this American influence? I will give you certain steps of there are about 8 steps in which the empire or a power falls, and 8 steps in which concurrent 8 steps in which his currency falls. So you become strong, you become dominant, your currency becomes the global currency. When that happens, you try to expand your footprint more so that more areas you dominate and more. That leads to overspending. Overspending leads to deficit spending. Over-ambition and overspending. So that leads to deficit spending. Deficit keeps increasing. You have a currency crisis. Here you have issues because inflation rises in your country. There is socio-political fractures come up, like you see in US today. If you look at US 30 years back, you never thought that this kind of social fracture will be there. Deep divides. Even the 70s, the race riots and all that was for unity rather than... Yeah. Today it is amazing.
the way it happened. You look at the 2020 elections, it is exactly akin to your 2001 election, which George Bush won and Al Gore lost. Supreme Al Court. Gore won the Al Gore won the apna the public votes, Popular vote the and popular vote, and Bush won the electoral vote. electoral college. Right? You never saw a fracture. It was smooth. Yes, they went to the Supreme Court and all, and they said yes, Florida governor had not taken it, but this Al Gore agreed and kept quiet. Look at what happened on Jan 6th. Sheesh. Next time it happens, there will be guns. Right? So that is the fracture which comes. Why is such a fracture coming in? Because of the socio-political problems which come up because of economic decline. Now, for you to have, you have close to 800 basis stroke lily pads. They don't come cheap. You got to pay, na? That is why he goes around to all those countries and want to buy off that place, because once you buy it off once and for all, you don't have to pay him, na? You have paid him once. Then that area becomes your territory. Which country in his sane mind is going to permit you to buy it off? A piece of your land. So then come the doubts on the leadership, the lack Sure. of faith in your currency. Thanks to Biden, when he weaponized that, there is Dollar. lack of faith in currency. Now, next stage is when people start looking for alternatives. That is the stage where you are now. People are looking for alternatives. कुछ और करते हैं यार, ये जम नहीं रहा. जम नहीं रहा है. That is where the US is, and he is getting scared. Now, it will take at least about 2 decades for it to decline further when an alternative comes up. Now, this is the standard format from the Roman Empire where you dictated a foreign currency. Like I said at the beginning, you have changed the playbook. Your UPI Yeah. is That's a not game changer. dictating a single By the way, currency. it's getting integrated with Europe. Yeah, big time. Taffy. It's big time. See, the basic issue in UPI is you have your currency, I have mine. Exchange The rate. Bureau of International Settlement gives out the exchange rate for that day. We do our trade, and your Reserve Bank equivalent, that your central bank and my Reserve Bank are linked. In a flash of an eye, the transaction is complete. Correct. SWIFT takes 5 to 7 days for clearance. And what the Chinese are bringing in, the bridge pay and other things, which the BIS gave it to them as MP, takes 3 days. UPI takes not even a day. It is just that your central bank or Reserve Bank should have that much money available when you're doing country to country in their current account. It will be there. You can decide with your banks the upper limit of each transaction that you do. Or you can either say for each transaction, or you can say for the day. Like for a common man, you can discuss with your bank, and Guarantee they on it. limit it that, okay, so many, depending on your, because it is going through your savings accounts to Yeah, current profile, account yeah. immediately. It's not credit. And depending on that, the bank gives the limit and says, okay, 50,000, 1 lakh, 2.5 lakhs, 5 lakhs for the day that you have to, that is available to you, or more, depending on how much money you keep. Wonder. And then you have the Vostro account, which earlier the RBI was doing it. Now they have given it off to the banks that you can open it. For the UPI, earlier you had to be on some UPI app. Now they have said no need to be on UPI app. If your account, your number which you are sending it is linked to your bank account, the money goes. That is what is scaring them, because 13 countries it is already, you have, it is not that you are making your UPI there. You are helping them create an equivalent UPI system for themselves. That's big. Capacity building. Yeah, 13 countries का वो हो गया है, 12 कंट्री का ऑलरेडी बचा हुआ है जिस पे काम चल रहा है, 30 कंट्री के चिट्ठियां आपके आ गए हैं, एंड 30 और देशों के expression of interest आए हैं, and quite a lot of these countries, I won't name them, are from Europe. That ये बिल्कुल बढ़िया है
कोई स्यापा नहीं है, मुझे कोई स्टेबल कॉइन नहीं चाहिए, मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। वो बाय द वे वो सब भी कर रहे हैं हम लोग, स्टेबल कॉइन भी बना रहे हैं। वो तो सब आप करते जाओगे ना कि भाई, बट नो, दिस इज समथिंग इज इक्विवेलेंट टू व्हाट एंशिएंट इंडिया में चक्रवर्ती सिस्टम होता था। The Chakravarti was the capo di tutti capi, the boss of all bosses. People accept him. They don't. He goes to war with them, defeats them. That's it. You do your business in your currency. You can grow. I will help you grow. I have got my own currency. Since you were the stronger one, your currency coin had more weight. You had gold, silver, and copper. As gold rate used to be set up in the empire, that this is the gold rate. No, you call it an empire, but each kingdom within that was free to progress in the way they want. You were providing them the security umbrella. So as a result, they also would have their armies, and they would give you a certain amount of indemnity to have this overarching security architecture. So let us say someone from outside this group of kingdoms came to attack somebody. Of course, the Chakravarti was overall the boss. The planning was done by that regional commander, that kingdom, because they know that area well. Well, They understand that enemy also well, very well. Yeah, Chakravarti will know about that person, but in-depth knowledge more would be available there because he shares the boundary with them. So this is readapted, and that is the similar one you're bringing. Like in Global South, you're improving their standard of living. You have given out how much to African Union over a period of, I think, 15 years or 20 years. If you total up the line of credit that you have opened up is 192 billion. yikes. Covers agriculture, covers IT, covers technology, covers every sector, infrastructure, covers every structure. You're not telling that you will take from me like the Chinese are saying and that I will build. No, capacity building down there, and their people are using it. Very few of yours are there to oversee. Education, like IIT Madras, Hamara facility is already there. In Tanzania, there is another facility which has opened up. Nigeria. That is your franchisee in Uganda, Kenya. Everybody is wanting that. We want this. It saves them a lot of money, no? Otherwise, the students have to pay to come to India to study. Even if it is cheaper, पैसे तो देने पड़ते हैं. अब उसी का आपका इंस्टीट्यूट वहां पे है. Like IIT Madras has its outlet in Zanzibar, that is Tanzania. It is run, the director has been sent from here, but you have local people also who come there. You have visiting faculty members from all over the world who come there. You have students from all over Africa who are studying there. Now this is the third or fourth year now, and the size is increasing. It is the local people now demanding that they want this stream also, they want this department also, they want this department also. Why will they not come when you are giving capacity building to them? Similar letters of credit are available with Latin America. So that is what you're doing. You've reshaped the manner. That's why I said that you changed the playbook. And the US and the West and the Chinese who were playing with the old Roman playbook suddenly have no answers for it. That how do you, if I do the capacity building in an area that is looking to poach and take out profits from, वो तो देगा ही नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, तो क्यों खोखला कर रहे हो उसको तुम? या तुम खोखला कर रहे हो. यहाँ पे आप उसको डेवलप करने बोल रहे हो, तुम भी डेवलप करो. We all will grow together. That is Vasudhaiva Kutumbakam when you say, going out all over. So the playbooks are changing in this region, Indo-Pacific region, for which the US unfortunately has no answers. उसको केवल मालूम है मेरे को लड़के सामान मेरे को लेना है. If the government doesn't agree to my policies, I will interfere there and change. Let him attempt to do something in Sri Lanka. जो अग्रहारा हुआ था उसके दुकान के सामने अग्रहारा हो जाएगा. By the way, LTTE के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर यूके में सर. See, this is the thing. They've carried these diseases back with them because they thought कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं होगा, बाहर होगा.
And that was a telling statement which people must remember. Don't think Poland is a very good friend of yours. Even the Ukrainians, when they were running away, you know the statement scat on camera? What is this going on? This is not supposed to be happening to white people. This is what the Africans and Asians do. Blue-eyed, blonde-haired people. This is what the Africans and the Yeah. Asians do. The colored people are supposed to be The living foreign like minister, this. the previous, no, not the foreign minister, the previous commerce minister, I remember, he said Europe is a garden and the rest is a jungle. He was fired after that, but That is the thought process. So now suddenly when you find that all the blacks, the colored Asians and the Hispanics have joined hands and you are leading them, that is the reason why bulk of the global south stands with you. तो प्लेबुक बदल दिया है आपने, किस तरह से करना है. आप भी ग्रो कर रहे हो, तुमको भी हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए. एंड टुगेदर टुडे इफ यू टेक द जीडीपी, व्हाई आर दे सो स्केर्ड ऑफ यू? Bharat plus bulk of the 120 plus odd countries who are with you in global south, if you total up their GDP, बूंद बूंद से घट भरे, it is 44% of the global GDP today. आज by the way IMF ने बोला है, oh no, India has slowed down, so you know it will take us till 2029 to hit $5 trillion. मैं बोला भाई 4.2 4.3 पे तो अभी खड़े हैं हम लोग, तो मुझे बोल रहा है 25 में 4.3 पे खड़े हैं. It will take me another 4 years to close the gap between 4.3 and 5. वो तो narratives चलाते हैं ना, because FDI has started flowing in. If you look at the three biggest hedge funds companies in the world, Vanguard, BlackRock and State Street, they have shut shop in China, which was their biggest offices outside of US. They have all shifted shop to Hyderabad. Hyderabad and multiple other places. Yeah, so that means why have they come here? Because they know that this is the place where they can make money. They may not be able to make as much money they realize what they were making in China, but they will be able to profit here. That is why he's come here. That is why he's opened the biggest office. नहीं तो छोटा सा ऑफिस खोलता है यार, बड़ा ऑफिस क्यों खोलना है? इतना बड़ा ऑफिस खोला है, मतलब it is an area of interest financially for him that I can make a profit from here. IMF कुछ भी बोलता रहे यार. Globally, all global economists are very clear that no country can take a double-digit hit on its GDP. Okay. That is why जिसके 25 to 35% dependencies था US पे, जैसे ही tariff war हुआ था, initial जाके बात किए थे. They chickened out when he twisted their arm to invest varying from 100 billion to 500 billion into their country. So which they don't have. So how can they do? So they kept quiet and came away. Okay. So look at China. It had basically two pillars on which its economy stood. 30% was realty, 68% was exports. And 1 to 2% जो बचा हुआ था, that used to be for the internal consumption. Realty sector has collapsed. And your exports, which was at 68%, is down to 25% as per their own Bureau of Statistics. So 68 minus 25 is how much? 43. 43 plus 30 is 73, and you expect me to believe his GDP is growing? किसको उल्लू बना रहे हो यार? कचरा हो गया उसके इकोनॉमी का. जीडीपी जो मेजर करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, you're only looking at produce. You have not included two things in that. What has gone for that produce and what have you earned from that produce. Today his net earning in exports, they say exports have risen, damn good. The net revenue earning as per his own Bureau of Statistics, the chart is in the negative, almost minus 10%. That means you are subsidizing your companies to sell their produce globally below the cost price. ठीक है, मार्केट तो ले लिया वहां पे, बिलो कॉस्ट प्राइस आप दे रहे हो, उस कंपनी को पैसा कौन दे रहा है कंपनी चलाने के लिए? गवर्नमेंट दे रहा है. तो पैसे कहां है तेरे पास? बचे कहां? छापेगा सर. तो वेयर इज योर जीडीपी गोइंग? सो जस्ट टू मेजर कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हो इज नॉट द करेक्ट
measurement. The economists have to come out with a new measurement to trace out how healthy your economy is. Chinese economy is not healthy at all. The US economy is not healthy. The European economy is not healthy. If you take the pillars of EU, UK तो चला गया, Germany, France. If they are going to IMF for a bailout, that tells you volumes of what their economy is, यार. फिर कौन सा global north? How are you different from the global south who also go to the IMF for bailout? How are you counting yourself to be part of global north if you are asking for a bailout from IMF? They're white, sir. That's why. Yeah, so that is the whole problem that is happening today. They don't want to admit कि भाई China तो चलो, they had not conquered it, but they had conquered its economy at one point in time and controlled its economy. कि भाई चाइना हमको बहुत दे रहा था, पैसे देता है, काफी पैसे देता है, तो अब उनके कंपनियां फंसी हुई हैं वहां पे, निकलना मुश्किल है, स्पेशली यूरोप का. यूएस ने तो काफी निकाल लिए हैं अपने, यूरोपियन कंपनीज फंसे हुए हैं, चाइना निकलने नहीं दे रहा है. अगर ये बात निकल गई कि कचरा हो गया और मेरी कंपनियां फंसी हैं, लुक एट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी विद इन दिस थिंग rout. It will be a rout. That is what is the problem that they are facing. And so he has to say कि नहीं, इंडिया उतना ग्रो नहीं कर रहा, चाइना कर रहा है, ये कर रहा है. किधर कर रहा है यार? Before COVID, 70 to 80% of all Christmas gifts, their packaging, their gift wrapping, the cards, everything used to come from China. 3 years उसने बंद कर दिया था, zero COVID policy. They found alternate, India, Thailand, Vietnam, Korea, सब तरफ से वो लेना शुरू कर दिया. As on date today, that industry has shut shop in China. There are no orders. As per their own statistics, 3 million eating joints last financial year shut shop. Jeez. Of all shapes and sizes, right? Fast food joints to restaurant, hi-fi restaurants. If on an average I take that there were 10 people in an eating joint, which is not just the organized labor, the unorganized labor also, which used to bring all the produce and other things, 30 million. Even if I say, okay, the unorganized labor, half of them found job to cart resources to some other places, 10 to 15 million are on the street with no pay. And they are fearing a similar amount is going to happen in this financial year. And you're telling me he's growing? दुकानें बंद हो रही हैं यार, दुकानें बंद हो रही हैं, लोग भाग रहे हैं वहां से. So, IMF is trying to protect the interests of the Europeans. The IMF and the World Bank was made for the global north. Let us be very clear. Yeah, it was the two arms of economic persuasion, as defined. Right. The Bretton Woods institution, US dominated, West dominated, that's it. अब वो कैसे बोल दे कि मेरी कंपनियां फंसी हैं? अब वो कैसे बोल दे कि भाई आपके पास, अमेरिकन ने बोला होगा इंडिया पे दबाव डालो तो इंडिया इज नॉट ग्रोइंग. अब 7% ग्रोथ रेट आप जा रहे हो, यू आर टेलिंग मी इज नॉट ग्रोइंग. ICICI Bank has put out 7.6%. Sir. Yeah. So is not growing. Projection. What he is telling, not 5 trillion. For all you know, by then you might be at 7.5 trillion. अब डरे हुए हैं ना. Germany is facing recession. By the end of this year, beginning this financial year खत्म होता है, अगले financial year में you would have taken Germany. आपको अगर आप नॉर्मल भी ग्रो कर रहे हो, लेवल इतना ज्यादा भी नहीं, 3-4-5% भी ग्रो कर रहे हो, 6% भी ग्रो कर रहे हो, जर्मनी तो जा ही रहा है नीचे ना. एक उठ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा भी जाएगा. चाइना गिर रहा है, आप ऊपर आ जाओगे. यूएस वैसे ही गिर रहा है, फिर आप ऊपर आ जाओगे. डर उनको ये है कि हमारा पुराना गुलाम हमसे ऊपर जा रहा है. दैट इज द फियर ऑफ द वाइट मैन. और द बिगेस्ट इशू इज उसके पास कोई चाबी नहीं है आपको रोकने के लिए, अदर देन ट्राइंग ऑल दिस
Stunts. थिंग्स स्टंट्स विद इन इंडिया टू क्रिएट, आग उनके लगाओ। चमचों के साथ जो ट्रेटर्स है, भारत के ट्रेटर्स हैं अंदर जो बैठे हैं, उनको पैसे देके कुछ ना कुछ कराते रहो कि कहीं झड़प कोई तो चिपके। अब पप्पू भी इतना सारा बोल रहा है, उसी के पैसों से बोल रहा है कि भाई कुछ तो चिपके, और चिपक नहीं रहा ना, कहीं कुछ चिपक के कुछ हो नहीं रहा। दैट इज द तड़प कि भाई जो पुराना हमारा होता था पहले कि दंगे फसाद हो जाते थे, कुछ हो नहीं रहा। और दूसरा कोई इकोनॉमिक एंगल उनके पास है नहीं, बिकॉज यू हैव ग्रोन डिस्पाइट देम, नॉट विद Because of them. Correct. सो नाउ दैट इज वेयर दे आर गेटिंग डेस्परेट कि भाई ये उठ रहा है, एंड ये उठते जा रहा है। एक तरफ कहता है IMF एंड वर्ल्ड बैंक द ग्लोबल इकोनॉमी इज सर्वाइविंग ऑन इंडियाज ग्रोथ, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नहीं नहीं इतना नहीं उग रहा है, आपको टाइम लगेगा। यार दिमाग साफ कर लो, क्या बोलना चाहते हो? कुछ भी हो तो that was really amazing. Sir, this was a great roundup, I must say. This was, going around. एक वो बचपन में पढ़ते थे ना, around the world in 80 days. 80 days, yes. So this is around the country in one podcast. Around the region in Around 80 the region days. in one podcast. Yes. So guys, that was one. We're going to be talking about the deep state. We will be asking sir about military. ठीक है, और एक छोटा सा हम बात भी करेंगे सर से, ये जो लोकल पोकल होता है ना हमारा, हम करने के वाले हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। But if you've enjoyed this podcast, please like the video, subscribe, and of course write your comments below and tell us what you guys feel is going to happen in the future. सबसे important चीज है, support the channel as much as you can, guys. We've hit 6 lakhs, but we need to go further. You guys can Yes. see a new setup, right? So you want to have more in-person conversations, support the channel. Namaskar. जय भारत।